Hello guys. In this recording on Romer model of endogenous growth, we'll be talking about how this model is different from Solow model. What are the assumptions which are different in Romer model as compared to the Solow model? Are the predictions different? And we will also talk about Romer economy. So this will consist of three sectors: final goods sector, intermediate goods sector, and the research sector. So these are the micro foundations in the model. And then we will derive the balanced growth equation of Romer model. After that, we will also talk about the comparative statics. That is, supposedly, if there is a permanent increase in the share of labor force which is engaged in research, then how will it affect the economy? How will it affect the steady state? Right. So these are the things which we will be doing in this model. So I hope this will be helpful to you. The Romer model. So we are going to distinguish the Romer model with the Solow model. And the main thing about the Romer model is that it has endogenized the technology, right? It has endogenized the technological progress. While in Solow model, technological progress was exogenously given. So this is the basic difference between the two, right? So I'll be writing out and you'll be writing alongside. And one thing is that in the last three classes, what we have done is that we have done about the economics of ideas. तो जो सोर्स है इस मॉडल की जो भी एक्सप्लेनेशन है वो इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज से ही आ रहा है. उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो रिसर्चर्स हैं वो इसलिए रिसर्च करते हैं कि उनको शुरू में बहुत फायदा मिलेगा जैसे ही वो इनोवेट करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, सर्विस को मार्केट में लॉन्च करेंगे. अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो कॉपी होना चालू हो जाएगा, राइट? सो रिसर्चर्स हु आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटिंग फ्रॉम देयर इन्वेंशंस, राइट, they will search for the new ideas. And Romer model has endogenized the technological progress, right? So please write this. अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज वाली रिकॉर्डिंग नहीं देखी then I would urge you to please see that first. The Romer model endogenizes technological progress by introducing the search for new ideas. By introducing the search for new ideas, right? देखिए जो भी एडवांस कंट्रीज हैं they have developed particularly because of the technological progress, right? And they have been able to have a sustained economic growth for a long period of time because they were they were continuously pushing their technology forward. जो और रिसोर्सेज है लेबर कैपिटल की एक सीमा है कि कितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, लेकिन इन आइडियाज की, इन इनोवेशंस की सीमा तो नहीं है. तो वही इस बात पे यहाँ पे बात हो रही है कि जो जो मॉडल है, रोमन मॉडल इज पर्टिकुलरली डिजाइन टू एक्सप्लेन हाउ एडवांस कंट्रीज वर एबल टू हैव सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. आप पेपर में ऐसे 1 2 3 4 मत लिखिएगा, आपको मैं समझाने पर के लिए बस लिख रहा हूँ. A model is designed
To explain why and how. The advanced countries of the world exhibit sustained economic growth, right? So सोलो मॉडल सोलो मॉडल में क्या था कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस था वो एक्सोजेनसली गिवन था। यहां पर उन्होंने क्या करा है कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसको भी एंडोजेनाइज करा है, ये बात करिए। सो हम सबसे पहले तो एक इक्वेशन प्रोडक्शन फंक्शन एज्यूम कर रहे हैं, y is equal to k to the power alpha ly to the power 1 minus alpha. This is what the production function is. K is the stock of capital, ly is the stock of labor, and y is the output, and a is the stock of ideas. So this is the new thing, so I'm just writing it this way. Alpha is lying between 0 to 1, right? So for a given level of A, this production function exhibits CRS. For a given level of technology, production function y is equal to k to the power alpha e ly to the power 1 minus alpha exhibit CRS, right? जैसे कि आप लैम्डा के लैम्डा एल कर दें, के की जगह लैम्डा के, एल की जगह एल वाई की जगह लैम्डा एल वाई, दिस इज देयर, राइट? So this is the same thing which you are getting, right? So what you are getting is just this lambda the power 1 minus alpha. So it is lambda to the power 1. It is lambda to the power 1. So what you have shown out here is, and this guy is what? Lambda YKL. So by increasing capital and labor by lambda, you are getting lambda YKL. That is, it is almost like you are multiplying the initial output with lambda, right? So what you are getting is CRS. This is what the CRS definition. This is what the CRS definition. But you also have to understand, and this is the point where the model is differing from Solow, that when you are incorporating A also as an input to the production function, then this production function is going to exhibit increasing returns to scale. However,
when we recognize ideas A also input the production function, then there are increasing returns to scale. सो इट इज लाइक कि अगर आप लेबर कैपिटल को डबल करेंगे तो आउटपुट आपका डबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप आइडियाज को भी डबल कर देंगे तो आपका आउटपुट मोर देन डबल हो जाएगा. So production function is going to exhibit increasing returns with respect to all three inputs: ideas, labor, capital. It is exhibiting constant returns to scale with respect to capital and labor. One thing. And why do you think the you are getting increasing returns to scale, particularly with respect to the ideas? That is coming fundamentally from the non-rivalrous nature of the ideas, which you have already talked in economics of ideas, right? So note that. Presence of increasing returns to scale results fundamentally from the non-rivalrous nature of ideas. Nature of idea. जो capital accumulation equation है, that is mainly similar as the Solow model only. That is you have capital accumulation equation, which is K dot is SKY minus delta K. Right. So I'm not repeating this thing again because I have already discussed this at length while I was explaining Solow model. हमने बहुत detail में इसको explain करा हुआ है. Right. So capital accumulates as see, what is SK? SK is the savings rate. So capital is accumulating as people in the economy are foregoing consumption. Foregoing consumption means savings at some rate SK, and the capital depreciates at the rate delta K. So मैंने आपको उस समय बताया था SY, small sy are the gross savings. So gross savings are equal to investment. S is equal to Y. Savings are equal to investment in the economy. और उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है. ये जो कैपिटल के डॉट है और कुछ नहीं है, नेट इन्वेस्टमेंट है. So again, you might have to look back at those recordings for Solow model. जिसमें this has been explained in very clear terms, all of that. So this SK into Y is the gross savings. But gross savings is equal to gross investment in the economy at equilibrium. From gross investment, when you
deduct depreciation, you get net investment. Net investment is the change in capital, right? Your labor is growing at some constant. And exogenous rate n. And some exogenous rate n. So it is L dot by L equals to n. L dot by L equals to n. नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम ये देखते हैं कि जो मेन नई इक्वेशन है वो टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप कर रही है, ए डॉट कैसे आ रहा है। जैसे आपने ये देखा कि देखिए, अगर आप 3 इनपुट्स मानते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, पहला कैपिटल, उसकी ग्रोथ की इक्वेशन, राइट, वो कैसे चेंज हो रहा है, लेबर की ग्रोथ की इक्वेशन है आपके पास, ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे ग्रो कर रही है, तीसरी इक्वेशन है, और ये नई है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सोलो मॉडल, बिकॉज सोलो मॉडल में तो हमने कह दिया था टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एक्सोजेनसली एट सम रेट, बट here in Romer model we will be talking about when technology is growing, how technology is growing, on what factors it depends. So we will be talking about that in the next recording, right? Chali, thank you beta. We are taking the discussion further about the Romer model. See, if you look at Solow model, one thing is true, that he has taken up technological change as exogenous, right? So he has understood this, that yes, the technology is improving, and but what is determining that technological improvement, that we don't know. So long run growth is due to the technological change, but what is determining that technological change, that we don't know. So that is outside the model, that is exogenously given. What Romer has tried to do, he has tried to endogenize this technological change. So I'll write few points first of all. So if you look at Solow on the one hand, and you look at Romer on the other, and as far as Solow is concerned, right, he is identifying that it is the technological change or technological improvement which is determining the long run. He is identifying that. He is very clear about it, right? But he is not providing any explanation of what is determining this technological change. So as far as long run growth is concerned, is determining, or is determined, not determining, is determined by technological change. But the problem is he has not explained what is bringing about this technological change. He has not explained that, right? What is determining technological change? He has not determined that. So so we say that technological change is something which is exogenous to the model, right? Or you can say long run growth is something which is exogenous to the model. This is what Solow has done. But what Romer has done is that he has picked up this disadvantage of the Solow model, and he has tried to explain this. What? So he tries to say that technological change is endogenous. Technological change is endogenous, one thing. He is saying this, that yes,
Solow has done till this point, he has done completely correct that long run growth is going to be determined by technological change. But what Romer is saying that I'm going one step further. I am trying to explain what is determining this technological change, right? So what he has said is that he accepts he accepts the Solow model result that technological progress is determining the long run growth in output per worker. But the point is that he is trying to tell that what is determining this technological change. So Romer attempts to explain what determines this technological change. One thing, right? So what is this technology term? So I mean, he has said this. Okay, you look at this kind of production function. So y is equal to, there are labor force which is involved in the production of output y to the power 1 minus alpha, x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha, and so on to xa to the power alpha, let's say, like this. So what is Ly? Ly is the number of workers producing output y, right? Xi is the different types of capital goods. Different types of capital. तो जो मेन बात यहाँ पे ये है कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है वो पूरी की पूरी एग्रीगेट कैपिटल पे नहीं है, बट इंडिविजुअली एक कैपिटल गुड पे है, राइट? दैट इज द मेन डिफरेंस, राइट? सो it is diminishing marginal returns are applied separately to each of the capital good. यहाँ तक लिखिए, note that. Note that diminishing marginal returns applies not to capital as a whole, but separately
each of the individual capital good. This is mainly becoming because you have also assumed that 0 is less than alpha is less than. This is what you have assumed. So if this is there, then x1 to the power alpha is there, and you just try to find out what del y by del x1 is. So you will find this that because alpha is less than 1, so there will be diminishing marginal returns to capital. So what do you have? Del y by del x1, let's say. So this is going to be what? Ly to the power 1 minus alpha into alpha x1 to the power alpha minus 1, right? X1 to the power alpha minus 1. So these are the marginal returns, but diminishing marginal returns, del 2y by del x2. So it is alpha into alpha minus 1, x1 to the power alpha minus 2, ly to the power alpha minus 1 minus alpha. But alpha is lying between 0 to 1. So this guy is going to be positive. These are the marginal returns, right? These are the marginal returns to the marginal returns. These are diminishing marginal returns, the second derivative. And because alpha is less than 1, so this term is going to be negative, which is going to make this entire term to be negative. And that is the reason we have diminishing marginal returns applied separately to each of the capital good, right? So which you can also write, this thing you can write as Ly to the power 1 minus alpha summation of I starting from 1 to a xi, like this, xi to the power alpha, I'm sorry, xi to the power alpha. Now there are two cases. One case is when a is fixed. A is the technology parameter, right? A is fixed. Other cases when A is not fixed. So it means that is also growth. It means that is also growing. So let's look at the first case first. A is fixed. If the technology is fixed. But if technology is fixed and technology is not improving, there are diminishing returns to the capital good. So what do you think will happen? Eventually, the marginal returns are going to fall, and eventually it will taper to 0. तुम्हारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर रही है, टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, कैपिटल के जो रिटर्न्स आएंगे वो हर पीरियड में फिर वो कम होते चले जाएंगे ना. एवरी टाइम यू यूज मोर कैपिटल, आई मीन इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज नॉट ग्रोइंग. तो उससे जो रिटर्न्स आएंगे वो कभी ना कभी तो कैपिटल तो डिप्रिशिएट होती रहेगी, खत्म ही होती रहेगी, उससे मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल है वो कम ही होते रहेंगे. सो अल्टीमेटली जो चीज ग्रोथ ला सकती थी वो लेके नहीं आ सकती, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ग्रोथ विल टेपर ऑफ. कैसे लिखेंगे? इफ A is fixed, the pattern of diminishing returns of the separate capital good would mean
that the growth would eventually taper to zero. Would eventually taper off to zero. अब मान लेते हैं कि दैट ए इज नॉट फिक्स्ड, तुम्हारा ए भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, तो कुछ वर्कर्स होंगे जो कि इस R&D में लगे होंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इंप्रूव करे. There'll be some workers who will be involved in this kind of research that how technology should be improved. मान लेते हैं कि ऐसे वर्कर्स की जो संख्या है वो LA है. LA is the amount of workers which are engaged in research and development which is going to improve technology, right? उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से नए कैपिटल गुड्स पैदा होंगे, न्यू कैपिटल गुड्स वुड फॉर्म. सो दे आर इन्वॉल्व इन research and development. It will lead to the invention of new capital goods. New capital goods. तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी देखते हैं तो ए डॉट इज द हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग ओवर टाइम. ए डॉट का मतलब क्या होता है? डीए बाई डी टी. दैट इज गामा एल ए टू द पावर लैम्डा ए टू द पावर 5. अब ये क्या आ गया, राइट? तो आप अगर ध्यान से देखें तो आप ये कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है. ये ए डॉट तुम्हें नहीं लगता कि दो चीजों पे डिपेंडेंट है? ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं जो कि इन्वॉल्व है R&D में नए कैपिटल गुड्स को इन्वेंट करने के लिए. जो ए डॉट है, ए डॉट इज नथिंग बट, आप कह सकते हो दिस इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन ए. चेंज इन ए कह दीजिए, दैट इज नथिंग बट डीए बाई डी टी. ठीक है? तो आप ही कह रहे हैं कि ये जो ए डॉट है ये किस पे डिपेंडेंट है? टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, किन चीजों पे डिपेंडेंट है? एक तो ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस सर्च में कि हम नई कैपिटल गुड्स बना पाए, राइट? नई कैपिटल गुड्स बना पाए. एंड ये जो लैम्डा है ना, what is this lambda, right? So lambda is the index of how slowly diminishing marginal productivity sets in for researchers. खुद सोचिए आप कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो हमेशा नए ही आइडियाज क्रिएट कर पाएंगे. तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना कि उनके आइडियाज में भी डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सेट होगी ही होगी. दूसरी चीज ए डॉट इस बात पे भी डिपेंडेंट है कि जो इनिशियल वैल्यू ऑफ ए है वो कितनी है, राइट? प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए इटसेल्फ. प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए इटसेल्फ. आप खुद सोचिए
आप अगर कोई नई डिस्कवरी करते हैं तो क्या आपने ही करी है वो नई डिस्कवरी? आप क्या दूसरों के आइडियाज पे डिपेंडेंट नहीं थे? आपने दूसरों के आइडियाज को लिया और एक नए आइडिया को फॉर्म करा। न्यूटन ने जब जो अपने लॉस थे, ग्रेविटेशन के लॉस थे, उनके बारे में जब पता करा होगा, उनको पता नहीं कितना फायदा मिला होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन्स को उस डिस्कवरी से बहुत फायदा मिला। और न्यूटन ने भी कोई नई चीज नहीं, मतलब उन्होंने भी और लोगों के आइडियाज को पढ़ा होगा एंड देन ही वुड हैव डिस्कवर्ड ओके ऐसे हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि आइडियाज बिल्कुल बिल्कुल वैक्यूम से आ जाएंगे, वो भी प्रिवेलिंग आइडियाज पे ही डिपेंड करेंगे और उसके बाद आप नए आइडियाज को रूप देंगे। इसी को कहते हैं जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट। जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट क्या होता है? जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट, जाइंट शोल्डर्स इफेक्ट होता है बेटा कि मान लेते हैं आप दूर तक इसलिए देख पा रहे हैं कि आप और लोगों के शोल्डर्स पे खड़े हैं, इसलिए आप दूर तक देख पाते हैं। तो ये कह इस बात को यहां रखने का क्या अर्थ है कि आप उस नए आइडिया को इजाद कर पाए क्योंकि और लोगों ने उन आइडियाज पे काम कर लिया था, उसके बाद आपने उन आइडियाज को रिफाइन करा है। तो जो टेक्नोलॉजी का जो चेंज है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि आज की टेक्नोलॉजी क्या है। अब हम लोग ने स्मार्टफोन देख लिया है, इंटरनेट देख लिया है, अब कुछ और ही आएगा, समथिंग एल्स विल कम, राइट? सो बट दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द करंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो ये कहते हैं, रोमर कहते हैं कि मान लीजिए कि लोग रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च सेक्टर में कई लोग लगे भी हुए हैं नए आइडियाज को फॉर्म करने के लिए, बट एट द सेम टाइम अगर ये इन नए लोगों को आप इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे पैसे के टर्म्स में, प्रॉफिट के टर्म्स में, तो ये क्यों अपना टाइम लगाएंगे नए आइडियाज को सर्च करने में? ये क्यों अपना टाइम लगाएंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करे, हमारा टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन फ्रंटियर आगे की तरफ शिफ्ट करे? ये क्यों लगाएंगे टाइम, राइट? तो रूमर कहते हैं, वो ये कहते हैं कि रिसर्च सेक्टर गेट्स रिवॉर्डेड विद पेटेंट, पेटेंट्स मिलता है रिसर्च सेक्टर को। ये जो रिसर्च सेक्टर है ना बेटा, दिस रिसर्च सेक्टर, इट गेट्स रिवॉर्डेड। रिसर्च सेक्टर के रिवॉर्ड्स क्या? पेटेंट्स। इन पेटेंट से क्या होगा? इस रिसर्च, इन रिसर्चर्स को मोनोपोली पोजीशन मिलेगी। इस मोनोपोली पोजीशन से क्या होगा? इस मोनोपोली पोजीशन से होगा कि उनको प्रॉफिट मिलेंगे, राइट? सो and wages are equated across the sectors ultimately, right? अच्छा, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट होती हैं इस इकोनॉमी में? सो हाउ मेनी पीपल will be there in the research sector and how many of them will be there in the output, will be producing output? Because कुछ लोग होने चाहिए जो रिसर्च करें, जो नए आइडियाज को इन्वेंट करें, और कुछ लोग होने चाहिए जो उन आइडियाज को यूज करके आउटपुट को प्रोड्यूस करें। दैट्स एन आइडिया, राइट? सो हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन दिस इकोनॉमी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और रिसोर्सेज आर एलोकेटेड इन दिस इकोनॉमी। तो वो ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो हम ये मान रहे हैं
कि एक एक फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट है जो कि कैपिटल में इन्वेस्ट हो रहा है। पहली बात तो ये, राइट। सो यहां पे भी जो आउटपुट है वो कैपिटल में जाएगा और लेबर में जाएगा। ठीक है। कैपिटल के लिए आप कह सकते हो कि अ कांस्टेंट फ्रैक्शन constant fraction of output is invested in capital। ठीक है। लेबर के लिए कह सकते हो कि कितने लोग लेबर के रिसर्च के सेक्टर में जाएंगे, how many of them will do research, and how many of them will produce output। तो टोटल लेबर फोर्स मेरी इकोनॉमी में एल है, उस लेबर का कांस्टेंट फ्रैक्शन एसआर फ्रैक्शन जो है वो रिसर्च में जा रहा है। उस लेबर फोर्स का कांस्टेंट फ्रैक्शन रिसर्च में जा रहा है, और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वह आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो रिसर्च में कितने लोग हैं, एस आर इंटू एल। आउटपुट कितने लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 - SR × L। दिस इज राइट। तो हम अभी तक यहां तक पहुंचे हैं, एंड विल टेक द डिस्कशन फर्दर ऑफ रोमर मॉडल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बेटा। रोमर मॉडल ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ। Up until now, we have already seen that रोमर मॉडल इज एंडोजेनाइजिंग द टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। मतलब वो बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्यों और कैसे इंप्रूव कर रही है, क्या रीजंस हैं। सोलो मॉडल के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ थी वो एक्सोजेनसली गिवन थी। यहां पर उन्होंने एंडोजेनाइज करने की चेष्टा करी है टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को। और डीप जाते हैं। रोमर इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर्स हैं। एक है फाइनल गुड्स सेक्टर, एक है इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर, और एक है रिसर्च सेक्टर। फाइनल गुड्स सेक्टर अपने नाम से ही हमारे को समझ में आ रहा है कि ये वह सेक्टर है जो कि फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर्स उसको यूज कर रहे हैं उस फाइनल आउटपुट को। रिसर्च सेक्टर भी हमारे को नाम से समझ में आ रहा है कि रिसर्च सेक्टर वो सेक्टर है जो कि आइडियाज को प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज प्रोड्यूसिंग आइडियाज। Now, where it is going to be used? These ideas will be used where? These ideas will be used in order to produce capital goods. Capital goods को produce करने के लिए इन ideas का use करा जाएगा। These ideas will be sold to whom by the research sector? These ideas will be sold to the intermediate sector by the research sector। मतलब जो intermediate sector है वो कुछ monopoly firms हैं जिनके पास इन आइडियाज को यूज करके कैपिटल गुड्स बनाने के पेटेंट हैं। रिसर्च सेक्टर ने इन इंटरमीडिएट गुड्स फर्म को पेटेंट्स दे दिए हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए हैं कि आप हमारे आइडिया को यूज कर सकते हैं, आप कैपिटल गुड बनाइए। इंटरमीडिएट सेक्टर में मोनोपोलीज हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं जो इन आइडियाज को यूज कर रही हैं रिसर्च सेक्टर से और कैपिटल गुड्स बनाने की चेष्टा कर रही हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड हैं जो कि अल्टीमेटली और गुड्स बनाने में अपना योगदान देते हैं। सो इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर कैपिटल गुड्स की मदद से फाइनल गुड्स सेक्टर को हेल्प करता है। अब हम डिटेल में इन सेक्टर्स को देखेंगे। आज की रिकॉर्डिंग में
हम फाइनल गुड सेक्टर पे ध्यान देते हैं। फाइनल गुड सेक्टर में बहुत सारी परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स हैं जो कि लेबर और कैपिटल को कंबाइन कर रही हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द होमोजेनियस आउटपुट। जो फाइनल गुड सेक्टर है वो एक ही तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, वो एक तरीके का होमोजीनियस आउटपुट वाई प्रोड्यूस कर रही है। देखिए हम किस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन लिखने के आदी हैं, हम कुछ ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन लिखते हैं जनरली, राइट? हम ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा, वी राइट इट लाइक दिस। यहां पर रोमर इस तरीके का प्रोडक्शन फंक्शन लिख रहे हैं, मैं समझाता हूं आपको। I starting or j starting from 1 to a x j to the power alpha। यहां पर वे ये कह रहे हैं कि ये जो एक्स जे वाई जो है वो तो आउटपुट विच इज बिंग प्रोड्यूस्ड है, एल वाई है जो लेबर यूज हो रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वाई। ये भी बात क्लियर आती है। ये जो एक्स जे है ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, आप कह सकते हैं ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये वही कैपिटल गुड्स हैं। अब एक तरह की कैपिटल नहीं है, राइट? देर इज मोर देन वन कैपिटल गुड इन द मॉडल, क्योंकि यहां पे समेशन ऑफ जे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to a लिखा है। देर आर मोर देन वन कैपिटल गुड इन द मॉडल। एक बात और ध्यान रखेंगे, देर इज मोर देन वन कैपिटल गुड इन द मॉडल। इन द मॉडल देखिए, पहले हम क्या लिख रहे थे, के टू द पावर, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये जो कैपिटल आ रही है ये इतने सारे कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनका मिश्रण है, उनका समेशन है, उनका एग्रीगेट है, राइट? तो ये जो नंबर ए है दैट इज टेलिंग यू, वैसे हमने अभी तक देखा है ए इज व्हाट, टेक्नोलॉजी। यहां पे जो नंबर ए है दैट इज टेलिंग यू द नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर देयर इन द इकोनॉमी, उन सबका एग्रीगेट इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज, राइट? सो इट मेजर्स the number of capital goods in the economy, right? Right. जो इन्वेंशंस हैं, जो आइडियाज हैं, वो ही इन कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं। जो इन्वेंशंस हैं, जो आइडियाज हैं, वो ही इन कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं। और और यही कैपिटल गुड्स ही फाइनल गुड्स सेक्टर यूज कर रहा है कैपिटल की तरह से अपने आउटपुट को बनाने में। ये बात है, ठीक है? इस पॉइंट को लिखेंगे बेटा। यह जो प्रोडक्शन फंक्शन लिखा है आपने, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha and so on to xa to the power alpha, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? आप एक बात देखिए कि मान लीजिए a गिवन है, सो फॉर a इज इक्वल टू 2, मान लीजिए दो तरह के कैपिटल गुड्स हैं, तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कौन सी बड़ी बात बता दी हमने? कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप ये जो भी लैम्डा और एक्स है इसको अगर आप सॉरी लेबर और एक्स है इसको अगर आप लैम्डा से बढ़ा दें तो जरा देखिए आउटपुट पे क्या असर आएगा? जहां जहां पे भी एल वाई है वहां पे लैम्डा एल वाई कर दीजिए, जहां जहां पे भी एक्स वन है वहां पे लैम्डा एक्स वन कर दीजिए, जहां जहां पे भी एक्स टू है वहां पे लैम्डा एक्स टू कर दीजिए। तो ये आप देख पा रहे हैं ना बेटा?
कि मैं किस तरफ इस बात को इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं। लैम्डा टू द पावर 1 minus alpha into lambda to the power alpha is what? Right? That is just lambda to the power 1. तो बेटा ये तो वही था। ये क्या चीज कहा जा रहा है कि अगर आपको नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स पता है, इसका मतलब है फॉर अ गिवन ए, इट मींस फॉर अ गिवन ए, अगर आप अगर आप अमाउंट ऑफ लेबर को डबल कर देते हैं और अमाउंट ऑफ ईच कैपिटल गुड को डबल कर देते हैं, तो जो आपका आउटपुट है वो भी डबल हो जाएगा। इस बात को क्या कहा जाएगा कि सीआरएस है, प्रोडक्शन फंक्शन इज एग्जिबिटिंग कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। बिल्कुल सही बात है। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, ये जो हमने इस तरह से लिखा है, क्या हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं? इंटेग्रल 0 to a xj to the power alpha dj. We can write like this. This is the sum of xj. So a measures the range of capital goods that are available to the final goods sector, right? Range of capital goods that are available to the final goods sector. आप इसमें कैसे नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स है, आप फिर आप रेंज लिख रहे हैं 0 to a, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप इसको इस तरह से लिख रहे हैं। देखिए, एक बात आप और समझेंगे कि क्योंकि आप कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कह रहे हैं, तो आप नंबर ऑफ फर्म्स के बारे में नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप ये जरूर कह सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं फाइनल गुड सेक्टर के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल कर रहा है, राइट? ओके। ये जो फर्म्स हैं, ये क्या करना चाहेंगी? ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेंगी, राइट? सो जरा देखें इनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक्सरसाइज कैसी है। जो फर्म्स है फाइनल गुड सेक्टर में, उनको डिसाइड करना है कि वो कितना लेबर और कितना अमाउंट ऑफ ईच कैपिटल गुड को यूज करें इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द आउटपुट। मान लेते हैं, आई मीन जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, द प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट इज 1। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, जब आप प्रॉफिट लिखते हैं तो आप सबसे पहले रेवेन्यू लिखेंगे ना? इसे रेवेन्यू माइनस कॉस्ट लिखेंगे आप। आपका रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट इनटू आउटपुट। प्राइस ऑफ फाइनल आउटपुट तो हमने ले लिया है 1। आउटपुट क्या है? आपका प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन आपने कैसे लिखा है? ly टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटेग्रल 0 to a xj टू द पावर अल्फा dj। ये आपका रेवेन्यू है। कॉस्ट क्या है? दो तरह से कॉस्ट आ रही है, एक है लेबर की कॉस्ट और एक है कैपिटल गुड्स की कॉस्ट। आप कितना लेबर यूज कर रहे हैं? ly। किस प्राइस पे लेबर को यूज कर रहे हैं? w पे। तो ये तो हुई लेबर की कॉस्ट। हर एक कैपिटल गुड का जो प्राइस है वो पीजे है। आप कितने कैपिटल गुड यूज कर रहे हैं? मतलब देर आर ए कैपिटल गुड्स विच यू आर यूजिंग। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 0 इंटेग्रल 0 to a pj xj। कहने का तात्पर्य क्या? गुड 1 था, पहला कैपिटल गुड x1 था, उसका प्राइस p1 था। दूसरा कैपिटल गुड x2 था, उसका प्राइस p2 था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही बात। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, राइट? आप चाहें तो इस स्टेप को लिखें, ना चाहें तो ना लिखें, आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख रहा हूं। फॉर a इज इक्वल टू 2, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ly टू द पावर 1 माइनस अल्फा x1 टू द पावर अल्फा प्लस x2 टू द पावर अल्फा। ठीक है, देखिए, आई मीन जब आप इंटेग्रल करते हो दूसरा आता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ समझाने भर के लिए कह रहा हूं। इसको इस तरह से लिखा जा रहा है। ये क्या होता बेटा?
P1 X1 plus P2 X2 plus P2 X2. तो आप क्या क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो यह पता करेंगे ना कि आपको कितना लेबर यूज करना है, हाउ मच ऑफ लेबर you will have to use, right? So how much of labor you have to use, it depends upon that is del pi by del ly. So it is 1 minus alpha ly to the power 1 minus alpha into minus 1, right? And alpha minus w equals to 0, like this, right? Minus w equals to 0. So can I write this as 1 minus alpha ly to the power minus alpha is equal to w, right? Is equal to w. Okay. Can I write this as it is now ly to the power alpha, like this. Okay. Now, if I can multiply this with, so I can multiply both numerator denominator by L to the power 1 minus alpha, right? I can do that. So denominator becomes what? Just ly now. And numerator is what? L to the power 1 minus alpha into x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha. That is nothing but y. Y is what? This guy, ly to the power 1 minus alpha into x1 to the power alpha plus x2 to the power alpha. That's what it is. W. Like this. So W is equal to, yeah, I should not be putting equal to sign out here. So W is equal to 1 minus alpha into y upon ly. That is what it is. So you will be hiring the labor until the marginal product of labor is equal to the wage, is equal to the wage. What about this guy? Del pi by del x1. Del pi by del x1, right? So what do I have? So I have x1 out here, I have x1 out here, okay? So I can write this as ly to the power 1 minus alpha into alpha x1 to the power alpha minus 1 minus p1 equals to 0, minus p1 equals to 0. You with me? So I can straight away write this as p1 equals to your alpha ly to the power x, this thing, to the power alpha minus 1. Or for any j, I can write this as pj equals to alpha ly to the power alpha minus 1 xj to the power alpha minus 1, like this. So I've written this. So the first condition is telling you that the firms are going to hire labor up to the point where the marginal product of labor is equal to W. Second condition says that firm is going to hire each capital good up until the point where the marginal product of each capital good is equal to its respective rental rate, right? Rental price PJ. Okay, so after this, we'll be starting with the intermediate goods sector, which we'll be doing in the next class, right? Thank you, Beta.
So let us now take the discussion further about the intermediate sector in the Romer model. So we have already seen the final goods sector. Now we are looking at the intermediate sector. So इंटरमीडिएट सेक्टर किन चीजों को कंसिस्ट करता है? इंटरमीडिएट सेक्टर में वो मोनोपोलिस्ट हैं जो कि इन कैपिटल गुड्स को बनाएंगे. नेचुरली ये कैपिटल गुड्स फाइनल गुड्स सेक्टर के फर्म्स को बेचे जाएंगे और फिर वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचेंगे. मोनोपोलिस्ट्स ने पेटेंट्स के द्वारा रिसर्च सेक्टर से इन कैपिटल गुड्स को बनाने की जो भी रिसर्च है या जो भी टेक्निक है उसको खरीद लिया है. इनके पास ये पेटेंट्स हैं, ये बनाएंगे. सो पहली बात तो ये कि इंटरमीडिएट सेक्टर में कौन कंसिस्ट कर रहा है? ये मोनोपोलिस्ट कंसिस्ट कर रहे हैं जो कि इन कैपिटल गुड्स को बनाएंगे और बाद में इनको फाइनल गुड्स सेक्टर को बेचा जाएगा और फाइनल गुड्स सेक्टर अल्टीमेटली अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचेगा. पहली बात तो ये. हर एक कैपिटल गुड को बनाने के लिए एक मोनोपोली फर्म है. उस मोनोपोली फर्म ने पेटेंट्स को खरीद लिया है. इन पेटेंट्स को खरीदने के बाद उनको इन गुड्स को बनाने की टेक्निक पता चल गई है और वो ये कैपिटल गुड्स को बना रहे हैं, ये कहा गया है यहां पे. दैट इज इस पर्टिकुलर पॉइंट में. फिर दूसरा, what is the output with which each monopolist firm is selling? भाई कैपिटल गुड बेच रहे हैं. जैसे x1 x2 x3 and so on to xj, ये सारी की सारी जो जो मोनोपोलिस्ट फर्म है ये क्या बेच रही हैं? ये कैपिटल गुड को बेच रही हैं. ये कैपिटल गुड को बेच रही हैं xj. ये कैपिटल गुड बना रही हैं और इन कैपिटल गुड्स का डिमांड फंक्शन भी गिवन है आपको विच इज pj xj. फिर दूसरी बात, इन मोनोपोलिस्ट फर्म की कॉस्ट क्या है? दो तरह की कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है, एक मार्जिनल कॉस्ट है. फिक्स कॉस्ट तो वो है कि भैया वो जो हमने खरीद लिया है, पेटेंट खरीदा है ना रिसर्च की फर्म से, तो उनको बाय करने के लिए हमने कुछ पैसा दिया होगा. सो दैट इज व्हाट इट इज. सो दैट इज व्हाट द फिक्स कॉस्ट इज. मार्जिनल कॉस्ट इज, अब वो जो रॉ कैपिटल हमने खरीदी है मान लो रिसर्च के रूप में जो भी, उसको कैपिटल गुड के रूप में प्रोड्यूस करने के लिए जो मार्जिनल कॉस्ट लग रही है वो आर है. दैट इज व्हाट द मार्जिनल कॉस्ट. हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की, हर एक कैपिटल गुड के यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या है? आर है. ये तरीका है. दिस इज व्हाट द इंटरमीडिएट गुड्स सेक्टर इज लुकिंग लाइक, राइट. तो भैया जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इंटरमीडिएट फर्म का वो कैसा दिखाई देगा? कोई एक फर्म पाई जे एक्स जे कोई एक फर्म पाई जे एक्स जे है, सॉरी एक फर्म जे है, उसका प्रॉफिट क्या होगा? पाई जे. वो क्या होगा? प्राइस ऑफ द इंटरमीडिएट गुड इनटू द क्वांटिटी ऑफ इंटरमीडिएट गुड, दैट इज व्हाट द रेवेन्यू, माइनस R which is the marginal cost into the quantity produced of the intermediate good minus fixed cost. लेकिन वो profit maximization में चला जाएगा. We don't have to consider that. अब इसमें जो J सबस्क्रिप्ट हटा रहा हूं मैं, right? So I'm just writing this like this, right? तो मुझे ये मैक्सिमाइज करना है in terms of x. So बस कर लीजिए बेटा. कितना x प्रोड्यूस करूं कि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज into derivative of second with respect to x is 1 plus second function as it is into derivative of first with respect to x is p dash x minus r is equal to 0. minus r is equal to 0. अब ये भी मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं, that is p plus x p dash x is equal to r. I can write like this and I can then divide both the sides by p. So once I divide both the sides by p, I get x p dash x upon p is equal to r by p. ठीक है बेटा, is equal to r by p. तो अगर मुझे यहां से p के टर्म्स में लिखना है, so if I want to write this in terms, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो ये आ जाएगा.
ये होगा ना बेटा? तो what is P going to look like? What is P going to look like? It will be 1 plus P dash X upon P into X into R. ये तुम्हें कुछ याद है? I mean, in the last class we have derived this. Pj is equal to alpha Ly to the power 1 minus alpha xj to the power alpha minus 1. So this is that firms, they are going to rent capital goods until the marginal product of each of the capital good is equal to the price Pj. ठीक है, इसी बात को हम जरा यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज हमारे को इसकी जरूरत है बेटा. So I can write TJ as, so this is from the earlier part, right? So if you have not seen that recording, पहले तो आपको वो recording देख लेनी चाहिए, then only all of this will make sense to you. xj to the power alpha minus 1. I'm getting rid of these subscripts. Alpha minus 1. So del P by del X will look like what? Alpha Ly to the power 1 minus alpha minus 1. X to the power alpha minus 1 is alpha minus 2, right? So I can just write this as alpha minus 1 Ly to the power alpha minus 1 minus alpha x to the power alpha minus 2, right? This is what my del P by del X is. Or in other words, this is P dash, this P dash X. Can I multiply this with X by P? Alpha into alpha minus 1 Ly to the power 1 minus alpha x to the power alpha minus 2 into X by P. And in place of P, what will you write? Alpha x to the power alpha minus 1. तो बेटा तो ये alpha will get cancelled out. This Ly to the power 1 minus alpha Ly to the power alpha minus 1 will cancel out, right? Okay, so what do you have? So this thing will look like alpha minus 1 into x to the power alpha minus 1 into x. That is your power is going to get added, and this will become alpha minus 1 then upon alpha minus 1. Again, this will get like this. So basically what you can write, this del P by del X is what? P dash x into x by P is equal to alpha minus 1 is equal to alpha minus 1. So what do you have? You have just written P as what? 1 upon 1 plus P dash x by P into R. So in place of P dash x into x by P, I can just write what? I can write this as alpha minus 1 into R. So this 1 will get cancelled out. This will become what? 1 upon alpha into R. 1 upon alpha into R. So you have what? P is equal to 1 upon alpha into R. So note that this intermediate goods firm is going to charge a price that is simply a markup over the marginal cost R. So it is just charging a price. मान लीजिए 1 upon alpha is 2. आपकी cost तो R है. आप कितना charge कर रहे हैं? Twice your cost. So it is you are just charging a price that is simply a markup over the marginal cost R. Now, this you have done for the particular monopolist, but that is true for all monopolists, right? Because all monopolists are same. They are facing the similar kind of demand function for each of the capital good. So all of these
capital goods are going to be sold at the same price, right? Demand function is also same. Each capital good employed by the final goods firm in the same amount. भाई ये एक मोनोपोलिस्ट के करा है, सारे के सारे मोनोपोलिस्ट सेम ही है, सबके सब एक ही तरह का डिमांड फंक्शन फेस कर रहे हैं, तो सबके ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम से यही आने वाला है, तो सबके सब इसी प्राइस पे बेचेंगे, राइट? और अगर सबके सब इसी प्राइस पे बेचेंगे तो जो जो कैपिटल गुड एम्प्लॉयड है बाय द फाइनल गुड फर्म इज गोइंग टू बी इन द सेम अमाउंट, एक्स जे इज इक्वल टू एक्स लाइक दिस, राइट? और क्योंकि हर कैपिटल गुड फर्म सेम प्राइस पे बेच रही है, सेम अमाउंट बेच रही है, तो हर कैपिटल गुड फर्म का प्रॉफिट भी सेम होगा, हर कैपिटल गुड फर्म का प्रॉफिट भी सेम होगा, राइट? दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये बात भी समझने वाली है कि जो द टोटल डिमांड फॉर द कैपिटल गुड जो आएगी, राइट, दैट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, राइट? फाइनली प्लीज राइट the total demand for capital from the intermediate goods from the intermediate good firms must equal to the total capital stock in the economy, to the total capital stock in the economy. कौन कर रहा है कैपिटल डिमांड? कैपिटल डिमांड तो ये करेंगे ना तुम्हारे इंटरमीडिएट गुड फर्म्स कर रही हैं, किससे? रिसर्च फर्म से। सो जो टोटल डिमांड ऑफ कैपिटल है, कितनी फर्म्स हैं? ए फर्म्स हैं, जीरो से ए जितनी भी फर्म्स हैं वो जितना भी कैपिटल डिमांड कर रही हैं, that has to be equal to the total capital which is available in the economy, right? उसके बाद हमने ये भी कहा कि हर फर्म कैपिटल गुड सेम ही अमाउंट में यूज कर रही है, राइट? सिंस कैपिटल गुड्स are each used in the same amount x, right? अगर मान लीजिए ए फर्म्स हैं और हर फर्म एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल करे, देखिए ये लिखिएगा मत, ऐसा है, सो ये होगा ना, ए फर्म्स हैं, हर फर्म्स एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल डिमांड कर रही है, तो जो टोटल डिमांड फॉर कैपिटल है शुड बी इक्वल टू द टोटल सप्लाई ऑफ कैपिटल. सो व्हाट इज द डिमांड फॉर कैपिटल इक्वल टू देन के अपॉन ए, राइट? राइट. अब फिर से फाइनल गुड्स के प्रोडक्शन फंक्शन पे जाइए. ये बात ध्यान रखेंगे कि जो हर फर्म जो भी कैपिटल गुड यूज कर रही है दैट इज द सेम अमाउंट, राइट? चलिए, द फाइनल गुड्स प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रीरिटन
using the fact that xj is equal to x, बेटा y क्या था तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, a ly to the power 1 minus alpha, यही था ना। उसके बाद तुमने प्रोडक्शन फंक्शन में क्या लिखा था, what is the kind of the production function which you have written, summation of, just going back, ये लिखा था ना बेटा, summation of j starting from 1 to a xj to the power alpha, this is what you have written। अब हमारे को ये पता है कि हर फर्म सेम अमाउंट ऑफ एक्स डिमांड कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ एक्स डिमांड कर रही है, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट, so instead of writing summation of this thing, I can just write this thing as x to the power alpha, I can just write this thing as x to the power alpha, and what is x to the power alpha, k to the power alpha upon a to the power alpha, what is that, a into ly to the power 1 minus alpha, a to the power minus alpha, k to the power alpha, I can write like this. I can write like this. So I can write like this, ly to the power 1 minus alpha, a to the power 1 minus alpha, k to the power alpha, right? So can't I write like this, a into ly to the power 1 minus alpha, to the power 1 minus alpha, right? So this is the final goods production function, right? And it is generating the same aggregate production function which we have been using throughout. So this is the production technology for the final goods sector. तो सेम ही तो आ गया बेटा, जो तुमने जिस तरह का प्रोडक्शन फंक्शन लिखा था पहले। So this is the production technology for final goods sector, right? In the next class, we will be talking about the research sector. So in this Romer economy, you had the final goods sector, you had the intermediate goods sector, and then you have the research sector. We have already talked about final goods sector. We have already talked about the intermediate sector in this class. In the next class, we'll be talking about the research sector, right? Sure. Thank you, beta. So we were discussing about the Romer model of endogenous growth. हम लोग intermediate goods sector के बारे में बात कर रहे थे। और अगर आप ध्यान दें तो जो इंटरमीडिएट गुड सप्लायर हैं उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, कितनी फर्म्स, कोई भी एक सप्लायर है वो एक्स जे प्रोड्यूस कर रहा है, किस प्राइस पे प्रोड्यूस कर रहा है, पीजे पे कर रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो क्या है, पीजे एक्स जे, राइट। कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बेटा, ये लिख लिख के ही समझ में आएगा अच्छी तरीके से। सो लेट्स राइट अलोंग साइड, नोट दैट intermediate goods supplier value of output is pjxj, is pjxj। इसमें से कितना अमाउंट, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जो उनका रेवेन्यू भी है, इसमें से कितना अमाउंट वो कैपिटल गुड्स को बाय करने में लगा देते हैं, राइट। हाउ मच, दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट is being used
pay for capital goods. XJ है, XJ इज द कैपिटल गुड, हर कैपिटल गुड का प्राइस क्या है? आर, आर एक्स जे। तो वो पैसा कितना लगा रहे हैं कैपिटल गुड्स पे? आर एक्स जे। वो कमा कितना रहे हैं? पीजे एक्स जे, राइट? सो इट इज आर अपॉन पीजे। देखिए ये सारे के सारी जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं रूमर मॉडल की, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको पहले पार्ट्स देखने ही होंगे, देन ओनली इट विल मेक सेंस। अगर आप ध्यान दें तो आप इस कंडीशन तक पहुंच पाए थे बेटा लास्ट टाइम। यू वर एबल टू रीच टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट, योर अल्फा पी इक्वल्स टू आर। आप इधर तक पहुंचे थे, मैंने इसमें सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा था पीछे। सो इट इज अल्फा पी इक्वल्स टू आर। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन थी इंटरमीडिएट गुड सप्लायर्स की। स्मॉल आर लिख लीजिए, कैपिटल आर लिख लीजिए इसको। इफ यू वांट यू कैन जस्ट राइट एट स्मॉल आर, बिकॉज अदरवाइज दिस माइट बी अ कंफ्यूजन आल्सो। Right. So earlier we have derived the equilibrium profit maximizing condition. What was that? Your alpha pj equals to r. This is what we have derived. Alpha p equals to r. यहाँ पे हम pj लिख रहे हैं. So pj is r upon alpha. pj is r upon alpha. इसको r pj को कैसे लिखोगे फिर? How would you write r upon pj? That is nothing but pj की जगह you can write r upon, sorry, you can write r upon alpha. So that is equal to alpha at the profit maximizing. So इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स फर्म्स हैं वो अल्फा प्रपोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यूज को कैपिटल गुड्स पे खर्च करती हैं, तो जो बचा हुआ है वो अपने पास रखती हैं प्रॉफिट के तरीके से। प्लीज राइट सो intermediate goods firm spend alpha proportion of their income या फिर of their revenues, of their revenues on capital goods. कैपिटल गुड्स। तो इसका क्या मतलब है, जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है दैट इज केप्ट एज प्रॉफिट्स। उनके लिए तो सिर्फ वो तो सिर्फ कैपिटल गुड्स ही बाय कर रही है ना, एंड देन दे आर कन्वर्टिंग दिस कैपिटल गुड्स इनटू द फाइनल गुड्स, राइट? So please write this. So 1 minus alpha
proportion of their revenues are kept as profits. तो अगर मान लेते हैं कि जो अल्फा वाई है दैट इज स्पेंट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, अगर अल्फा वाई प्रोपोर्शन इज बीइंग स्पेंट ऑन इंटरमीडिएट गुड्स, सो यही तो उनका रेवेन्यू होगा। अगर फाइनल गुड्स वाली फर्म जो है वो अल्फा वाई खर्च करती हैं इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, तो यही इंटरमीडिएट गुड्स का रेवेन्यू है। तो जो 1 - अल्फा जो बचेगा अमाउंट, दैट इज केप्ट एज द प्रॉफिट्स, राइट? So please write if alpha y is the amount spent, not spend, on intermediate goods, right? On intermediate goods, then alpha y is the revenue is the revenue of the intermediate firms, right? उसका अगर 1 - अल्फा part is been kept as the profits, right? If 1 - अल्फा of intermediate firms profits firms revenue कहो, are set aside for profits. Then of that revenue, you are keeping 1 - alpha aside for profits. So this is the total aggregate profit of all the intermediate firms together. How many firms are there? A. Hey, this part was not very clearly given, so I'm just trying to break it down. If there are A firms, A intermediate goods firms. Intermediate goods firms. Then what is the profit of one particular firm? So the profit of the all firms together is 1 - alpha y. Profit of one particular firm would be pi upon the number of intermediate firms, that is pi upon A, right? So if there are A firms, the profit of the particular firm is pi j.
which is you just divide this profit by number of firms. Right, beta? Right. So from here, what you know is that the profit of the particular firm is the function of y upon a, right? Is proportional to y upon a, and we will be using this particular point when we'll be writing about the research sector. Please write this. So from here we know that profit of the particular firm, profit of the particular firm is proportional to y upon a, right? So what do we do out here is that from here, we're going to write about the research sector after this particular point. So that I'll take up in the next class. But I'll be using this particular point, right, which we have just written here. Chaliye, I'll be taking your next session next day. Thank you, beta. Romer model of endogenous growth. We've been talking about this model for quite some time now. एंड हमने फाइनल गुड सेक्टर के बारे में बात करी है रोमर इकोनॉमी में. वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंटरमीडिएट गुड सेक्टर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसर्च सेक्टर, राइट? So I mean, you look at it, anyone is free to prospect for the new ideas. Anybody could just find out new ideas. And in our model, what do we mean by new ideas? New ideas are the ideas or the designs which can make the new capital goods, right? तो मान लीजिए मैं रिसर्चर हूं, मैं नए नए आइडियाज की तलाश कर रहा हूं जिससे नई कैपिटल गुड्स बन पाए, नई तरीके के कैपिटल गुड्स बन पाए. और वो कैपिटल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स फर्म बनाती हैं, और इंटरमीडिएट गुड्स फर्म फाइनल गुड्स फर्म को बेचती हैं, और फाइनल गुड्स फर्म अल्टीमेटली फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करती हैं. हम इस न्यू डिजाइंस आर डिस्कवर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, और हम इस इक्वेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, राइट? हम इस इक्वेशन के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं यहां पर. सो आपने अगर पहले की रिकॉर्डिंग्स करी हो तो आपने ये देखेंगे कि हमने इसके बारे में यहाँ पे बात करी हुई है. That is A dot is equal to gamma L A to the power lambda A to the power phi, कुछ ऐसा. अब यहाँ पे बस गामा की जगह थीटा लिख दिया, इसका क्या फर्क पड़ता है? A dot is the instantaneous change in A, right? ये जो टेक्नोलॉजी, जो एंडोजेनस टेक्नोलॉजी है, that is the instantaneous change in A. Or LA is the proportion of labor force which is engaged in finding out new ideas, which is engaged in research, right? लैम्डा मान लेते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी है. लैम्डा इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स which is engaged in research, and lambda is lying between 0 to 1, so it is less than 1. So ultimately diminishing marginal productivity set in होगी वहां पे भी, रिसर्चर्स के लिए भी. और अगर आप देखें तो ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग वैल्यू ऑफ ए पे भी. That is, this phi is showing you the externality which is attached to giant shoulders effect. मतलब मान लीजिए जैसे आपने किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो उसको बड़े लोग अपनी पीठ पे बिठा लेते हैं और वो और दूर तक देख पाता है. वो इसलिए दूर तक देख पाता है क्योंकि वो जाइंट शोल्डर्स पे बैठा हुआ है. रिसर्च के तरीके से यहाँ पे रिसर्च के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यह कहने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो रिसर्चर्स हैं ये भी ज्यादा अच्छी रिसर्च इसलिए कर पाते हैं बिकॉज और आइडियाज ऑलरेडी डेवलप हुए हुए होते हैं, उन आइडियाज पे ही वो काम करते हैं. तो जो ऑलरेडी डेवलप्ड आइडियाज हैं वो जाइंट शोल्डर्स हैं.
और उसके बियॉन्ड फिर वो देखने की कोशिश करते हैं। दैट इज एन आइडिया। फिर आगे यही बात करी गई है कि एक तो जो आइडियाज है वो इस इक्वेशन से डेवलप हो रहे हैं। और कभी भी जो भी कोई नया डिजाइन डिस्कवर होता है, इन्वेंटर को एक पेटेंट मिलता है। पेटेंट उसको ये एक तरीके का एक एक राइट देता है कि आप इस चीज को इतने समय तक आप ही यूज कर पाएंगे, आप ही के पास एक्सक्लूसिव राइट है कैपिटल गुड बनाने का। तो मान लीजिए मैं इन्वेंटर हूं, मैं रिसर्चर हूं, मेरे को ये पेटेंट मिला है, और आप इंटरमीडिएट गुड्स फर्म है। तो आपको जब मैंने ये पेटेंट बेच दिया तो उससे मुझे कुछ प्रोसीड्स हुई, बिकॉज अल्टीमेटली तो मैं आप ही को बेचूंगा ना। आप इंटरमीडिएट गुड बना रहे हैं, आप कैपिटल गुड बना रहे हैं। उस उन प्रोसीड से मैं कुछ सेव करूंगा, कुछ कंज्यूम करूंगा। अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जी प्राइस क्या होगा पेटेंट फॉर अ न्यू डिजाइन। हम मान लेते हैं कि कोई भी बिड कर सकता है जी पेटेंट के लिए, जो भी हाईएस्ट बिडर होगा मैं उसको दे दूंगा। ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। अब एक बात देखिए, मान लीजिए मैं कुछ एक तरीके का पेटेंट का कुछ प्राइस है जो मेरे अपने दिमाग में है, और जब आप बिड करेंगे प्राइस को, आप उस प्राइस पे खरीदना चाहेंगे मुझसे। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, मान लीजिए आप पेटेंट खरीद रहे हैं, तो 30 सालों तक मान लेते हैं कि आपके पास ये राइट रहेगा कि सिर्फ आप ही ये कैपिटल गुड्स इस डिजाइन के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्या आप ये नहीं देखेंगे कि अगले 30 सालों तक आने वाला जो प्रॉफिट है, उन सारे के सारे प्रॉफिट्स की वैल्यू आज क्या है? प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू। I'm getting the stream of revenues for future. So I'm going to find out what is the present discounted value for that investment, for those profits which I'm making. अगर तो मुझे लगता है कि आपने जो प्राइस मांग रहे हैं वो प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंटरमीडिएट फर्म, गुड फर्म से ज्यादा है, मतलब मेरे मेरे को जो प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं उन सब की वैल्यू आज जितनी है वो कम है एज कंपेयर टू द प्राइस ऑफ अ पेटेंट, नोबडी would be willing to pay, right? No one would be willing to pay. मान लीजिए प्राइस ऑफ अ पेटेंट इज लेस देन द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू द प्रॉफिट्स अर्न बाय द इंटरमीडिएट गुड फर्म। आप इंटरमीडिएट गुड फर्म है, आपने सोच लिया कि भैया इन सारे प्रॉफिट्स की वैल्यू आज जितनी है वो कहीं गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्राइस जो मांग रहा है। तो somebody else will bid higher. No, someone would be willing to pay. हम्म, मान लीजिए पीए जो है वो प्राइस है न्यू डिजाइन का, मान लेते हैं दैट पीए is the price न्यू डिजाइन, राइट? तो बेटा हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस रहेंगे ना। हम्म, अ, मैं ये रिसर्चर था, मैं इस पैसे को जो मिलेगा मुझे इस पेटेंट को देने के बाद आपसे, आप इंटरमीडिएट गुड फॉर्म में, मैं रिसर्चर हूं, या तो मैं इसको, ये इज द प्राइस ऑफ अ न्यू डिजाइन, ठीक है आपके पास। आप चलिए आपके एंगल से सोचते हैं, आप इंटरमीडिएट गुड फॉर्म है, आपसे ये प्राइस पीए मांगा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इतना पैसा आपके पास है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट? मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, अपने आंसर में मत लिखना।
Please don't write it from in your answer. Think from the point of view of intermediate good firm. मैं आपसे प्राइस पीए मांग रहा हूं, आपके पास ये पैसा पड़ा हुआ है, आप इस पैसे को बैंक में भी रख सकते हैं और आप उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हैं. सो पीए is invested in a bank. Then interest earned investing is what? RP. आप इंटरमीडिएट गुड फर्म है, मैं आपके एंगल से सोच रहा हूं, मैं आपसे प्राइस पीए मांग रहा हूं, आपके पास ये पैसा होगा ना मान लीजिए, तभी तो आप ये खरीदने की सोच रहे हैं. तो आपके पास दो ऑप्शंस. ऑप्शन वन, आप बैंक में डाल दीजिए. ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, आप पेटेंट खरीद लीजिए. अगर आप पेटेंट खरीदते हैं, ठीक, आप पेटेंट खरीदते हैं तो आपको उस पेटेंट से कोई फायदा हो रहा होगा ना, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे उस पेटेंट को खरीदने से, राइट. और उसके बाद आप उसको बेच भी सकते हैं, मतलब उससे उसको बेच के आपको जो भी कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो वो आपकी बात है, राइट. इफ द अमाउंट EA is invested in the patent, patent, you can earn the profits, then earn the profits period, then sell the patent. आगे भेज दो, राइट. सो आई मीन इसका मतलब है जो वट एवर कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस विल अकर, that is going to result from the change in the price of the place. Gain or loss that results from the change in the price of the patent. मतलब you'll be getting pi plus P dot A. P dot 8 is the change in price. P dot 8. In equilibrium, idea is that it should be the case that the rate of return from both the options should be equal.
वही इक्विलिब्रियम है. So in equilibrium, must be the case at the rate of return in both of these investments is the same. That means RPA equals to pi plus P dot A. So you can write the value as pi upon PA plus P dot A upon P. Along the balanced growth path, R is constant. So what is R? R is the price at which the supply of capital is equal to the demand for capital, right? And that is also proportional to Y by K. So along the balanced growth R is constant, right? Therefore, pi by PA must also be constant. Must also be constant. And when will pi by PA be constant? When pi and PA both are growing at the same rate, then only they will be constant. Which means that pi and PA grow at the same rate. At the same rate, right? And you have already shown in the last class, this is that pi A is 1 minus alpha into alpha Y by A. You have shown this for a particular firm, right? So that is proportional to Y by A also. We have shown that pi is proportional. So this is the point which I was telling you that I'll be using that recording in this one, proportional Y by A. And you know that the per capita output small y and A is growing at the same rate. Output small y and A
grow at the same rate, right? Along the balanced growth path, G small y is equal to G A is they are equal. And that what comes out is that basically and GK, they are all same. G small k, right? Along the balanced growth path, right? So small y A, all of them are growing at the same rate. So that y by A may not have to write this much in the answer, but I'm just writing this will grow at the population growth rate. Population growth rate n. Population growth rate n, right? So pi by A is growing at the constant rate, which means pi and PA, they also have to grow at the same rate. And you also notice that the per capita output small y and A are they growing at the same rate, and capital Y by A is growing at the rate of n. That is the initial assumptions which you have made in the initial recordings. So this would mean you can write R equals to pi by PA plus n. So I can write this as R minus n equals to pi by PA. So PA equals to pi upon R minus n. PA equals to pi upon R minus n, right? Okay, so this is the price of the patent along the balanced growth path, PA. Patent along the balanced growth path, right? Okay, so we'll take the discussion further in the next class. Thank you, Bhutan. So in this recording, we're going to talk about the case that along the balanced growth path, the growth of the technology is given by GA equals to lambda n 1 minus 5. हम ये prove करना. This is what we are going to prove. So this is just using the knowledge which you have developed in the earlier classes of the Romer model. So we are given with this production function y equals to k to the power alpha al y to the power 1 minus alpha. A is of course capital. Ly is the labor employed in the production of output. LA is the labor employed in the production of research or in research, right? So LA Ly is the labor employed in production of output, right? And A is the stock of ideas or stock of knowledge. Alpha is the parameter, which is lying between 0 to 1. K dot is SK, K minus DK. So SK is the rate of savings. This is D into K, not derivative of K, D into K. D is the rate of depreciation.
Population growth rate is also given to you. L dot by L is equal to N. Is the population growth rate. A dot is the number of new ideas which are produced. That is the change in the stock of knowledge. Number of ideas, or is it number of new ideas produced. Number of new ideas produced. And you write A dot as delta bar LA, where delta bar is the rate of discovery of new ideas. Right. LA is the proportion of population which is engaged in research. Ly is the proportion of labor which is engaged in production of output. La is the proportion of population which is engaged in research. Or not proportion, the population engaged in research. Not proportion of population, because it is Ly plus La is the total L. So Ly is the population engaged in the production of output. La is the population engaged in research. Rate of discovery. New ideas, which is delta bar, is delta e to the power phi, where delta and phi are constants. Phi greater than 0, it is representing that the productivity of research increases with the stock of ideas. That also is happening, right? Uh, so there are stock of ideas which have already been discovered, and with those stock of ideas, then new ideas are developed again. Represents productivity of research increases with stock of ideas. Already been discovered. And phi less than 0 represent the fishing out case. Phi less than 0 would represent fishing out case. That is, with the stock of ideas, now you're not able to develop the new ideas. The productivity of research is falling. So I can write A dot as lambda. This is A dot lambda. Sorry, delta LA to the power lambda
a to the power 5. Right. So I'm writing it this particular way. So you have a dot you have written as delta bar LA, delta bar you have written as lambda a to the power 5. And here, no, delta bar you've written as delta a to the power 5. So, and here you're writing LA as LA to the power delta. This LA to the power lambda. This lambda can lie between 0 to 1. It is representing the productivity of labor in terms of the new ideas. Phi is representing the productivity of research in terms of new ideas. This is telling you, lambda is telling you the productivity of labor in terms of new ideas. It represents the productivity of labor in terms of new ideas. So phi is the externality which is associated with standing on shoulders effect. Externalities. Externality. Associated by representing standing on shoulders effect. Standing on shoulders effect. So you are able to see far off because other people have developed the earlier ideas. So that is what the standing on shoulders effect. I've talked about the standing on shoulders yesterday also. मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो किसी बड़े के कंधों पे बैठा हुआ है, तो वो दूर तक देख पाता है. वो इसलिए दूर तक देख पा रहा है बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन द जाइंट शोल्डर्स, राइट. सो दैट इज व्हाट स्टैंडिंग ऑन शोल्डर्स इफेक्ट इज, कि आप रिसर्च भी अच्छी कर पा रहे हैं, आप और नए नए आयाम ढूंढ रहे हैं रिसर्च में. वो इस वजह से ढूंढ रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी लोगों ने डेवलप कर लिया है आइडियाज को, और उन आइडियाज के ऊपर आपने काम करा है. दैट इज व्हाट द स्टैंडिंग ऑन शोल्डर्स इफेक्ट इज, राइट. और लैम्डा externality associated externality associated with lambda is referred to as stepping on toes effect. Stepping on toes effect. Right. So it is like the decreasing returns to the physical resources in the knowledge production function. That is what stepping on toes effect is. The amount of labor involved in research plus the amount of labor involved in the output production is equal to the total labor which is available. So this is the distribution of the total labor force.
right? And the proportion of labor involved in research is, let's say, that is equal to SR, and this is the labor force engaged in research produce new ideas, right? And this is the constant proportion. We have assumed this. Hmm. So this is the constant proportion of the labor force which is engaged in research. So 1 minus SR is the constant proportion of the labor force which is engaged in the production of output. So constant portion of labor force engaged in production of output, that would be what? 1 minus SR. 1 minus SR. Now the point is that along the balanced growth path, the rate of growth of per capita output, rate of growth of technology, rate of growth of capital labor ratio, that is all same. That is what the balanced growth path is, right? So along a balanced growth path, rate of growth of per capita output, G small y, rate of growth capital labor ratio, G small k, and the growth rate of stock of ideas, growth rate of stock of ideas, they are all growing at the same rate. They're all growing at the same rate. Okay. We have written A dot as what? Delta LA to the power lambda A to the power 5, right? And then I can divide both sides by A. Delta LE to the power this, and this thing becomes E to the power 5, 1 minus. You can
you can write this. Of course, this is 5 minus 1, but I will write this as this thing, delta LA to the power lambda upon A to the power 1 minus 5. I can write like this. And along the balance growth part, GA is constant. So this A dot by A is GA. Along a balanced growth path, A dot by A is GA is constant. But you will have this thing as constant only if the rate of growth of numerator and the rate of growth of denominator is same. But this growth rate will be constant if and only if numerator and denominator of grow at the same rate. They grow at the same rate. So what happens is, let me just write this again. So A dot by A is delta LA to the power lambda whole upon A to the power 1 minus 5. Let me take log of both the sides. Log of A dot by A. This is log of delta plus lambda log of LA, right, minus 1 minus 5 log of it, right? So A dot by A is what? GA. And then I take the time log derivative. So what is A dot by A? That is GA. I'm taking time log derivatives. So d log of delta by dt is 0. That is just a constant. So 1 minus 5 A by dt. But GA is a number, that's a constant. So that is, this is going to be equal to 0, right? This is 0 plus lambda. This is what? This is what? 1 upon LA into dLA by dt. That is LA dot by LA. You have, I mean, while doing growth theory, you should know about time log derivatives. I mean, this I think I've taught about this in the first class of Solow model. If you have not seen that recording, please see that. And this d log of A by dt is 1 upon A dA by dt. dA by dt is A dot. So it is A dot by A. Right. One thing you have to understand, this is not L dot, LA dot upon LA is not SA. Is not SR. SR is the share of the labor force engaged in the population. That is not the growth rate. So write one line along the balanced growth path.
Growth rate of number of researchers. What is L dot A by LA telling you? That is the growth rate of number of researchers. Must be equal to the rate of growth of population. That is LA dot by LA is equal to N, right? So if the growth rate of the number of researchers is going to be more than the growth rate of the population, then in that case, the number of researchers will be more than the population. And that is absurd. कोई sense ही नहीं है इस बात का. So if it were higher, the number of researchers would eventually exceed the population, which is impossible. So now what can I write? In place of L dot A by LA dot by LA is, I can write N minus 1 minus phi, and this A dot by A is what GA is, right? And from here I can write GA as, just taking this thing here. Okay, I'll take it 1 minus phi GA equals to lambda N, or GA equals to lambda N upon 1 minus phi. Right? So this is what we want to prove. That is the growth rate in the stock of ideas. That is what, or the rate of technological progress, that is equal to lambda N upon 1 minus phi in the balance curve, along the balance curve. That is an idea what we want to show, right? Chaliye, so yesterday we derived this, that growth of technology in the balanced growth path. Now there are few special cases which we want to talk about. Please write them alongside. There are few special cases. Case 1. Let lambda equals to 1, I equals to 0. And LA is constant. That is the labor force engaged in the production of research or research ideas. That is constant. And the productivity of researchers delta
is constant, right? Productivity of researchers delta is constant, and we know this, that a dot is equal to delta la to the power lambda a to the power phi. Hmm. Well, I can write this as, just because lambda is 1 and this is a to the power 0. So basically, which I am left out with is only delta into LA. Mhm. So delta is constant, LA is constant. So at every period of time, the function is taking just the constant number of ideas, right? So the stock of ideas is constant because delta is constant, LA is constant. Please write the economy. Is generating constant number of ideas. This each period. Each period. Hmm. So if you are generating the constant number of ideas each period, then A dot by A is going to fall over time, right? Eventually, the growth rate of, because what is A dot by A? That is the growth rate of uh, the ideas, right? Growth rate of the stock of ideas, that is going to fall over time because A dot is not growing. And if that is not growing, so eventually that growth rate is going to fall. Therefore, the growth rate of stock of ideas, A dot by A, decreases over time and eventually approaching zero. Also, the per capita growth rate of output, that is also going to fall over time. That is also not increasing because an economy is not operating at the sustainable growth rate without a research effort, right? I won't say without a research effort, I mean with a constant research effort, because the productivity of output is subject to diminishing returns. If we are not producing new ideas, or if we are producing ideas just at the constant rate, eventually, maybe in a very long term, even the productivity of output is also going to fall. The rate of growth of output, that is also going to fall, right? Please write. And the growth rate of per capita output also falls over time an economy does not operate
a sustainable growth rate. Even with a constant research effort. Even with a constant research effort. So the point is that you are having a constant research effort, fair enough. But the problem is that over time, the growth rate in the ideas that is also going to fall if you're just having the constant research effort, right? Uh, that a dot by a will fall to zero over time. Because what is happening is that with the constant research of effort, stock of ideas is increasing. So a is increasing over time, but a dot is not increasing at the same rate, and because of that, a dot by a is falling. Okay, in my economy I will be able to produce more, one of course if when I'll use more inputs, and two with more research. If eventually the research effort growth rate is going to fall, then in the very long time the per capita output growth rate, that is also going to fall, and eventually that is going to be that is also approaching towards zero. So even with a constant research effort, you cannot have the sustainable growth rate of output. That is one example. The another example is when you have your case 2, right? uh, Let us look at case 2 out here. Lambda is 1, phi is 1, L is constant, and productivity and productivity of researchers delta is constant. Mhm. So how do you write? E dot is equal to lambda, delta La to the power lambda e to the power phi. You write it like that. But lambda is 1 and phi is 1. So you have this. So you have A dot by A as delta La. A dot by A as delta La. So A dot by is the growth rate in the stock of ideas. So growth rate in stock of ideas is constant now. Delta is constant, La is constant. So growth rate in the stock of ideas, that is constant in each period, right? So please write. This suggests that the growth rate stock of ideas is constant each period. So if the growth rate of the research is constant, then the growth rate of the output is also constant, because that's of the per capita output. That's y dot by y is equal to your a dot by a. So that is also constant. Uh, Therefore,
growth rate of per capita output is also constant. So at least it is growing, maybe at the constant rate, but it is still growing, right? Per capita output is still growing. So even with a constant number of researchers, uh, you still have the LA is constant. The people or the labor force engaged in research, that is constant. So even with a constant number of researchers, you still have a sustainable growth rate. Hmm. And even with constant number of researchers, the economy operates at a sustainable growth rate. Right? So these were the two special cases. So we'll take the discussion further in the next class. Thank you, Beta. Comparative statics in Roman model. So we have talked about the balanced growth equation in Roman model. We have also talked about the special cases for Roman model. Now we are going to talk about a comparative statics. So let us say there is a permanent increase in the R&D share. That is, if the share of the population engaged in the R&D, that is going to increase. How is this going to affect? So please write this. If the share of the population engaged in R&D increases permanently, right? What is going to happen? One, we are going to assume few things just to make our life a little simpler. Mhm. Note that we have already written this point. This thing here. A dot by A is equal to delta LA to the power lambda upon A1 minus 5. We have already written this in the earlier recording, so you might see that. Note that. We have already written. A dot by A equals to theta LA to the power lambda upon E to the power 1 minus 5, right? And when lambda is 1 and phi is 0, so I can just write this as theta LA upon L. LA upon L. So if SR is the share of the population engaged in um, research,
engaged in research. So LA is the share of the population engaged in research from the earlier recordings. So, and we are writing this so LA is the population engaged in research. I'm sorry. So SR into the total labor force. SR is the share of population engaged in the total population engaged in research. Let's say 25% of people are engaged in research. Total population is 100. So LA is 25% of 100, which is 25. Right? So it is like this. Okay. We have also derived this by, remember this, GA equals to lambda n upon 1 minus 5. So remember this guy. So please write in a steady state. In a steady state, economy grows along a balanced growth path. The rate of technological progress equals to lambda n upon 1 minus 5. But we have assumed lambda equals to 1 and phi equals to 0. Therefore, the rate of technological progress is equal to the rate of population growth. G equals to N. Rate of technological progress is equal to the rate of population growth, which is equal to N. And then you have this. Well, we have what? We have also note that. Note that. A dot by A is equal to theta SRL upon A, right? Because when you are writing A dot by A is equal to theta LA by L, but LA by L is what? Theta SRL, right? I think it should be A. I'm so sorry about it. A. And this also you can write that as theta LA by A. Okay. And what is A dot by A? That is equal to GA. So I can write GA as theta LA by A. So that would mean GA by theta is equal to LA by A. Keep this thing in head. Okay. Now suppose the share of population engaged in research is going to increase. Now suppose SR increases. From SR to SR dash at time period 0. If the share of population is going to increase, it means that of course the population engaged in research is going to increase, right? Therefore,
with population of L naught, means the total population at time period 0 is L naught. The number of researchers increases as SR increases. Mhm. So beta, if this is going to increase, then LA by A, right, jumps to a higher level. What do you mean by this? At time period 0, the share of population engaged in research, that is going to increase, right? So it means that now people who are engaged in research, that is going to increase, LA is going to increase. So this ratio LA by A is going to increase. Okay. When you have more number of researchers, of course, these more number of researchers are going to produce new ideas, more new ideas. Hmm. The additional researchers produce increased number of ideas. So the growth of technology is also higher at this point. So at time period 0, when the share of people who are engaged in research, that is going to increase, so the number of people engaged in the research in producing new ideas, that is going to increase. When they're going to produce, when the more people are going to be engaged in research, then naturally more ideas will be generated. With more ideas, technology is going to improve, right? uh, so the growth rate of technology is also going to be higher at this particular point. Okay. Now if you look at it carefully, which is A dot by A, that is the growth of technology. This is this ratio, LA by A. This is this ratio, LA by A. Now, A dot by A, the balanced growth path, A dot by A is your growth of technology. That is equal to the population growth, right? Okay. Now, this thing, this is also A dot by A, which is equal to theta LA by A. You have just written it. A dot by A is equal to theta LA by A. Fair enough. Where they are equal, that is GA by theta. Where these two are equal, that is GA by theta. Okay. At time period 0, what happens is that
And this GA by theta, of course, you can write that as theta S R L upon A. You can write like that. You can write this A dot by A is nothing but GA. You can write this thing as theta S R L by A, or you can also write this as, of course, I mean, you will be writing this as theta S R L upon A only. So at time period zero, when the share of population engaged in research, that is going to increase. So I can write this as theta. I can write this as SR dash L upon A. But here the labor force is this guy, and this is your A naught, right? Fair enough. Acha, you tell me one thing. This is one more thing. LA is SR into total labor force. So with the new share and the labor force at time period zero. So the people engaged in research is A, your LA dash or whatever. Okay. This particular point is labeled as X. This particular point is labeled as X. Now at X, what is happening? At X, you can see the growth rate of technology is more than the growth rate of population. In the balanced growth path, the growth rate of technology and the growth rate of population is same. But at X, what you can see is that growth rate of technology A dot by A is more than the growth rate of population N. That is exogenously given. At X, technological progress E dot by A exceeds the population growth N. So LA by A falls over time. Falls over time, right? LA by A is falling over time. Technological growth rate is growing more than the growth rate of population. Beta, when population will increase, then only the people who are engaged in research that will increase. But the rate of growth of population itself is lesser than the rate of growth of technology. So if I look at how A is growing, so A is growing at a faster rate than the growth rate of the labor force. And if the labor force growth rate uh, is going to grow at the slower rate than the growth of technology, then LA by A is going to fall. Are you understanding this? What I'm trying to say is this. When L is increasing at the rate N, then out of this L only, there'll be some people who are engaged in research. A is increasing at the rate whatever, right? That is increasing at the rate GA or whatever. Now, this is growing faster than this. So naturally, when denominator is going to grow faster than the numerator, LA by A is going to fall over time. So when they're going to fall over time, it's going to fall like this, right? So as the ratio decreases over time, the rate of technology, even this GA by this A dot by A, that is also going to fall over time. The rate of technology gradually falls over time
until the economy returns to the balanced growth path where GA is equal to N. Where GA is equal to N. So if you look at it carefully, I mean, the time path is going to be like this. The time path is going to be like this. Here you have the growth of technology, here you have time, and here you have this T or whatever, right? So it increases this thing till here, and here you have GA equals to N. So it increases. And the same thing then gradually falls. This growth rate falls like this. This growth rate falls like this. And then Jones beautifully write this. Therefore, even if there is a permanent increase in the share of population engaged in research, it can increase the growth rate temporarily, but eventually it falls back. Growth rate of technology temporarily, but not in the long run. Therefore, the permanent increase in the share of population engaged in research increases the rate of technological progress but not in the long run. Not in the long run, right? Okay, I'll take the discussion further in the next class. Thank you, Betty.